valuation of investment entities. First of all, what is an investment entity? Let's understand. It's very simple. A company which is engaged in making investment is an investment entity. यानी कि एक कंपनी जिसका धंधा ही इन्वेस्टमेंट करना है is an investment company. So a private equity is an investment entity. A venture capital fund is an investment entity. So all the businesses whose जिनका काम ही औरों के बिजनेस में पैसा लगाना है, those are referred as the investment entities. So the example is private equity or venture capital or investment companies. So these are the investment entities. How to do the valuation of investment entities? Remember, it's very simple. What can be the value? What can be the value of an investment entity? And I'm sure you can very easily understand. Value of an investment entity is going to be equal to value of all the companies where this company has made investment. So value of an investment entity is total of value of the companies where this entity has made investment. But remember, value of those entities on pro rata basis. Pro rata meaning if those businesses are completely funded by the investment entity, the value of the entire business of that entity will be value of this investment entity. But if it is only 50%, then 50% of that company will be part of the value of this entity. So how do you do the valuation of an investment entity? You do the valuation of an investment entity by doing the valuation of the entities where this investment entity has made investments. Are you with me? Do you get this? Yes, sir. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको इस कंपनी ने जिस कंपनी में पैसा लगाया है उन कंपनीज का वैल्यूएशन करना है. अब याद रखिए, उन कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? उन कंपनी का वैल्यूएशन उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अब तक हमने डिस्कस किया है. क्या मतलब है कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जहाँ जिन जिन कंपनियों में इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, अज्यूमिंग दैट ऑल दोज आर गोइंग कंसर्न, तो वो सारी कंपनीज का एज अ गोइंग कंसर्न वैल्यूएशन करा जाएगा फॉलोइंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करके वो सारी कंपनीज का वैल्यूएशन करो. जो भी वैल्यू आएगा बेस्ड ऑन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस एंटिटीज इन्वेस्टमेंट इनटू दोस, उतना प्रोरेटा अमाउंट निकालो. सारी कंपनियों का अमाउंट का टोटल करो और ये जो कंपनी जिसका वैल्यूएशन कर रहे हो उस कंपनी का भी वैल्यूएशन कर लो, क्योंकि उसके पास में अभी भी कुछ पैसा हो सकता है और कुछ, तो उसको भी ऐड कर दो. एंड व्हेन यू ऐड ऑल दिस टुगेदर you get the value of the investment entity. I hope that makes sense to every one of you. Does it? Yes, sir. Yeah. Yes, Okay. sir. So valuation of investment entities will require valuation of investee entities. The process of valuation of these investee companies will be same as applicable to other entities that we have discussed. So this is how, friends, you will do the valuation of investment entities.